Bond yield and yield to maturity. This is 197th module of financial management, and we are going through the discussion of calculating the cost of bond. हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड की कॉस्ट असल में वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो बॉन्ड होल्डर्स इस बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट से अर्न करना चाहते हैं. यही रिटर्न जब हम मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड के साथ रिलेट करके देखते हैं तो हम इसको बॉन्ड यील्ड कहते हैं. यानी एक बॉन्ड के ऊपर अगर उसकी पार या फेस वैल्यू लेट से 1000 रुपीज़ है और उसका क्यूपॉन या इंटरेस्ट रेट 10% है, तो उसका रिटर्न 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1000 10% ही होगा. लेकिन अगर ये बॉन्ड मार्केट में 1000 के बजाय 2000 का सेल हो रहा हो, तो ये 100 रुपीज़ इंटरेस्ट जब 2000 से डिवाइड होगा तो ये रिटर्न 10% के बजाय कम होके 5% रह जाएगा. So bond yield is actually calculating the return to the bondholder with reference to the current or existing market price. The logic is that that is the price which a bondholder is paying currently at the moment. Then the term yield to maturity of the bond also refers to the return to the bondholder with reference to the price from the beginning till the end, that is the maturity period. उस वक्त तक उसका जो रिटर्न है मार्केट प्राइस के हिसाब से वो क्या बनता है. So return of the bondholder including the interest and the capital gain is basically what is called the yield to maturity. यानी रिटर्न बॉन्ड होल्डर का उसके होल्डिंग पीरियड या उसके मेच्योरिटी पीरियड तक कितना है. इसके अंदर हम दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं, यानी वो प्राइस जिस पे बॉन्ड खरीदा गया और वो प्राइस जिस पे बेचा गया, और वो हो सकता है कि मेच्योरिटी वैल्यू ही हो, और उसको हम एवरेज आउट करते हैं. इसी तरीके से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट शुरू में है और आखिर में है उसको भी हम एवरेज आउट करते हैं. आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है. तो यील्ड टू मेच्योरिटी इज नंबर 1 द इंटरेस्ट, the annual interest that we get on the bond, and then the difference in the buying and selling or the initial and the maturity value, and that is actually the capital gain or the profit or the loss that we get. So if 1000 is the price at which the bond was sold and 850 was the price at which the bond was purchased, and it happened over a period of 7 years, तो हम 1000 और 850 का डिफरेंस लेकर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर कैपिटल गेन की अमाउंट हमारे पास आ जाती है. पर ईयर कैपिटल गेन की अमाउंट को हम 150 यानी इंटरेस्ट में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा, विच विल इंक्लूड कैपिटल गेन एज वेल एज द बॉन्ड इंटरेस्ट. देन वी डिवाइड इट with the value of एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द होल्डिंग पीरियड. यानी ये बॉन्ड 7 ईयर्स तक हमने होल्ड किया और 7 ईयर्स तक हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी थी. ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एंड द क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1000 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 2, and this gives us the value of average investment. So the total return is then divided by the average investment in order to get yield to maturity. So we conclude that yield to maturity is actually the average return the bond holder gets over the holding period or from the beginning till the maturity of the bond, which in this case comes out to be 18.53%.